just few glimpses of what a mature relationship they had. She wasn't suffering in that home. He took such good care of her as a wife. He would see from which side Hazrat Aisha radhiyallahu anha would sip water. He would take that water from her, twist around the glass and take a sip from the same side. They raced. She used to ask him, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, how much do you love me? कितनी मोहब्बत है आपको मुझसे? So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to say, जैसे knot होती है ना tight, उस तरह. So whenever she wanted this security, he would say, how's the knot? And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would say, perfect, tight. Does she look depressed? Does she? No. I don't have time to go into the details. But the verses of Tayammum came when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was on an expedition. She was with him. हार गुम गया. कहती है मेरा हार ढूंढे, मैं नहीं जाती इसके बगैर. He stopped everyone. ढूंढो भाई, हार ढूंढो. हमारी सोसाइटी में कितने मर्द हैं जो अपनी बीवी को इतना प्रिविलेज देंगे? So she basically worked a lot on women empowerment. She worked on rights of women in Islam. Why? Because all the women would come to her and ask her the issues. She would consult Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and get back to them. She was teaching them Islam. She had the right comprehension of Deen, and she had a distinctive place as a teacher of Quran and fiqh. और उनकी contribution poetry, medicine, history, fiqh, sharia. बड़े बड़े सहाबा आके उनसे नॉलेज पूछते थे. हम समझते हैं वो कोई किसी की जल्दी शादी हो गई उसको तो पागल हो जाना चाहिए. इससे बड़ा ऑपरेशन एक औरत का लिए क्या है? She doesn't have this issue. She is fine. She was content. She had gratitude. She was a person with decision making. She loved fun. She was eloquent in speech. She was expressive in love. She participated in her ibadah. She was a keen learner. And yes, she had hair. Another profile. A profile of a housewife. ये एक लड़की है जिसकी शादी हुई. बड़े डायनामिक घर की लड़की है. तो सोचा मैं बड़े डायनामिक घर से हूँ तो अब्बा बहुत पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अम्मा भी एक वर्किंग वुमन है, मुझे भी काम देंगे. पर नहीं, अब्बा ने शादी कर दी. ऑपरेशन. शादी के बाद सिर्फ घर के काम, नौकर भी नहीं दिया. किचन भी संभालो, बच्चे भी संभालो और कहीं नजर ना आओ. पैसे भी इतने ही हैं, बस ये मिलेंगे. Nothing more than that. In these times, if you hear this story, and we hear it every day, क्या कहेंगे आप? बेचारी कितना जुल्म हो रहा है, छोड़ दो उसको सीधा करो, मैं बताती हूं कैसे. And then we go around sharing that story with everyone. देखो बेचारी के साथ कितना जुल्म हुआ है, तौबा तौबा, ऐसा शौहर. और अगर भी उसका शौहर नजर आते ये अल्लाह क्या जुल्म जालिम है. But I have a story of an empowered, blessed housewife, the youngest daughter of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Fatima radhiyallahu anha. And she spent her early years in the loving and tender care of the Prophet, her parents. When Hazrat Khadija radhiyallahu anha passed away, she was the only one who was at home, and she used to take care of her father. And she waits all day for her father to come, and they're going through very difficult times. And everyone used to say that she looks so much like the Prophet in her walk, talk, looks. No identity crisis. She doesn't have any problem. And we remember the story जब Rasulullah sallallahu alaihi wasallam नमाज पढ़ रहे हैं और उनके ऊपर किसी ने आके camel intestines, guts डाल दी. And somebody tells her, and she was a young girl, and she comes running and she's crying and she's lifting it from her father and she's continuously crying. And we know that another famous story, Hazrat Ali radhiyallahu anhu जब उनके पास आते हैं कहती है देखें, look at my hands, मेरे हाथों में ये देखें क्या हो गया. And he says, सुनो, मेरे पास तो कुछ नहीं है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ आए हैं, कह दी, why don't you go and talk to your father, maybe he'll give you something. क्या दिया था उन्होंने? तस्बीहात फातिमा. That's what he gave her. And what did she do? Did she complain? No. She took it as a blessing. And that is why in the hadith we find out Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said
indeed this is an angel that never descends to the earth, even before tonight. He sought permission from his Lord to greet me with peace and to give me the glad tidings that Fatima is the chief of the women of paradise, and Al-Hassan, Al-Hussein radhiyallahu anhuma are the chiefs of the youth of the people of paradise. So, look at her. Grace, love of Allah, clarity in practices, pride, respect, courage, and bravery. And yes, she was beneficial to all. So what is the problem? ये जो सारा दिन हम गेम खेल रहे हैं ना, oppression and the blessing, the pros and cons of being women in Islam, getting our rights and fulfilling our responsibilities. सारा दिन हम कहते हैं नहीं, आप मुझे मेरी responsibilities क्यों बताते हैं, rights भी तो बता दें. What is the problem? The problem is this Chinese whisper. हमारा दीन जो शुरू हुआ था ना, वो एज अ ब्लेसिंग ही शुरू हुआ था. Because we didn't go to the right sources, we didn't take the right knowledge. हमने वो इल्म लिया ही नहीं सही sources से. So, as a Chinese whisper, it became an oppression. हमने एक एक बात सुनी, आगे पास की, सुना है इस्लाम में ये है, सुना है फलां आयत में ये है, सुना है उसने ये कहा है, and we have blown things out of proportion. कुछ का कुछ हमने बना दिया. And our problem is we are so much into our careers, our education. हमारे लिए क्या है? Intellectualism. Actually मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मुझे तो सब कुछ आता है. I myself am a doctor. And the first time I opened Quran when I had 2 kids, accidentally landing into a Quran class. Not at all my lifestyle. I would run away from religious people. Never wanted to be with religious people. They suffocate me. They look at me. मुझे देखती है ऐसे, मुझे गिल्ट देती हैं, मुझे अपनी आंखों से इशारे से बताती हैं तुम गुनाहगार हो. And when I actually opened Quran with my Quran teacher, I was shocked. Being intellectual, मेडिसिन की क्या बुक्स नहीं पढ़ी, क्या कॉन्सेप्ट्स नहीं समझे, क्या दुनिया में चीजें नहीं देखी, अपने दीन को चाइनीज विस्पर बना दिया, अपने दीन को समझा ही नहीं. इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इस्लाम, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. हम कहते हैं ठीक है भाई, उस जमाने में तो यूनिवर्सिटी नहीं थी, IBA नहीं था, उस जमाने में ये आजकल के कंटेम्प्रेरी इश्यूज नहीं थे, तो ठीक है वो घर में थी, दे वर हैप्पी, बट आई एम नॉट हैप्पी. आई डोंट वांट टू बी होम, आई डोंट वांट टू बी मैरिड एट यंग एज, I don't want to be a housewife, no way. I am not going to give my money to my husband. हाथ तो लगाई मेरी किसी चीज को, इस्लाम ने मुझे इजाजत दी है, मैं क्यों दूं उसको, मैं क्यों करूं. Let's look at the figures from West. क्या हुआ, वो जो औरतें बाहर निकली हैं, Naomi Wolf, she has written a bestseller, very good book, The Beauty Myth. Lots of figures in that. I've just picked a couple. Women who are coming out of their homes, who feel the religion or the responsibilities, the right responsibilities are suffocating them. They don't want it that way. Look at them. They're divorced, they're single, they're widowed, they have a lot of economic pressure, no support anywhere. They're paid less. It's a known fact. Even the West is struggling, same jobs and they're paid less. They're paid high only in one job. कौन सी है, कोई बताएगा? जिसने बताया वो खुद मेरी तरफ से लेके चॉकलेट खा ले. जॉब हैरेसमेंट. दे आर एक्चुअली कंसर्न्ड अबाउट दिस थिंग कि हमें जॉब्स पे किया जाता है. ये उनके अपने फिगर्स हैं. दे आर नॉट स्टडीज डन बाय एनी रिलीजियस पीपल लाइक अस. अ सर्वे ऑफ वुमेन फ्रॉम 19 G20 कंट्रीज, ये देखें वही चीज. वर्क लाइफ होम लाइफ बैलेंस नहीं आ रहा, करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए परेशान, बच्चों के लिए परेशान, पे के लिए परेशान. क्यों? कहते हमने ना ऑप्रेस लाइफस्टाइल नहीं गुजारना. मुसलमान तो अपनी औरत को तबाह कर रहे हैं. डिलेड मदरहुड, कहते हम बच्चे नहीं पैदा करेंगे, अभी नहीं, आई एम नॉट रेडी फॉर दैट, इट्स नॉट माई जॉब. आई हैव एम्बिशंस, आई हैव ड्रीम्स, आई हैव विजन्स, आई वांट टू अचीव देम फर्स्ट. सो डेमोग्राफिकल बैलेंस इज बीइंग टोटली अपसेट एंड you can again search. Look into the figures of stay-home mothers. Google it. So many countries, they are actually begging their women now to stay home. कि आप सिर्फ बच्चा पैदा करें, हम आपको सारा खर्चा देंगे, जितना आपको
जॉब में पैसा मिलता है मुझसे ज्यादा देंगे, जस्ट स्टे होम। और साथ ही वो कहते हैं हम जरा मुस्लिम कंट्रीज में जाके ना उनको बताएं आपकी वुमेन कितनी ऑप्रेस्ड है, उनको निकालें। दे से द वुमेन हु आर ऑप्रेस्ड बाय व्हाट दे शुड बी डूइंग, they are going out, they want to have their own life, their kids are suffering, juvenile crimes are on the rise. They say 2 million reports of maltreatment of these children are there because they are totally neglected. Why? Because हर माँ ने कहा अपनी बेटी को तुम मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा हो, तुमसे मैंने काम करवाना है। इस्लाम कहता है बेटी को बेटी बनाए। इस्लाम ने औरत को एक प्रोटेक्शन दी है। She has lots of rights, but if she takes them as suppression, then she is in trouble. I was looking at these figures from the European Commission fact sheet from 22nd September 2015. They are talking about women empowerment. Many years back, 20, 30 years back, they started these NGOs with women rights. They failed badly. Women didn't come out. Then they started talking about gender discrimination. It's still not working. Now, the new slogan that we are raising everywhere is women empowerment. Yeah. और उसमें वो क्या कहते हैं? औरत को वैल्यू देंगे, औरत को हम ये साइकिल डिस्क्रिमिनेशन का ब्रेक करेंगे, लेकिन क्या करेंगे? वो काम करे ना। मर्द अकेला बेचारा कैसे काम करेगा? उसने फिल्म भी देखनी है, उसने गेम्स भी खेलनी है, उसने अपनी लाइफ भी इंजॉय करनी है, तो औरत काम करे ना साथ, दोनों मिलके घर चलाएंगे। और उसको उसके कान में सिर्फ बता दिया देखो ऑप्रेस नहीं होना, निकलो निकलो काम करो। सो बेसिकली इस्लाम इज अ ब्लेसिंग फॉर वुमेन। दिस इज द रियलिटी चेक। व्हाई? स्टडी कुरान, स्टडी हदीस, एंड वंस यू डन विद दैट, दिस इज व्हाट you would find out Islam tells you. Use your talents, but wisely. Not every woman can come out. Not every woman can stay home. Not every woman can take a job. You know, there are different talents and potentials, and you have to identify yourself. Look into yourself as a Muslim woman with self-worth. ये हिजाब आपको पेंडू नहीं बनाता, आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। आप पता नहीं कैसे सांस लेती हैं, मुझे सांस नहीं आता, दरअसल एलर्जी हो जाती है, रैश। कुछ नहीं करता। अच्छा, मेरे सामने डॉक्टर के सामने कोट करते आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं हुई। वो मैंने एक बुक में पढ़ा था कि जो हिजाब पहनती है ना उनको वो सन रेज नहीं मिलती। डू यू नो फॉर अ फैक्ट द वुमेन हु आर वेयरिंग बिकिनीज एंड ऑन द बीचेस ऑल डे, दे हैव मोर विटामिन डी डेफिशिएंसी देन married life. Take it seriously. That's your priority. You're a homemaker. Kids, take them seriously. You're building a sadaqah jariyah for yourself. They are not musibat. And yes, your ibadah, that is your focus. That is blessing for you. And you can still be productive in the society. You don't have to come on the front pages everywhere. I mean, you don't have to sit anywhere and say, मैंने बहुत कुछ पढ़ा था, मैंने IBA से पढ़ा था, शादी हुई, फिर बच्चे हुए, बस फिर घर में ही रह गई, भूल गया सब कुछ। Be happy. This was my GPA. I studied for IBA. I got married. I had kids, and Alhamdulillah. And somebody would say to you, "Bichari." So no, I'm not bichari. I'm educated mom. I'm giving the right angles to my kids. I'm a productive member of the society. I'm putting in my share in so many areas. Don't look down on me and be a full circle.